Hello everyone, my name is Dr. Asad Malik and I'm here to complete the course Fundamental of Information Technology. ठीक है, तो इस कोर्स का जो टाइटल है CABSVVO2005. Yes, okay. These are the topics which we going to cover. The first one is what is the computer. So in the computer, we will understand what is the characteristics of the computer and what are the main application of the computers and what is the IT. IT is actually stand for information technology. Okay. And after that, we will also understand what is the present, past and future of IT. After that, we will also understand what are the basic components, just like the processing unit, keyboard, mouse, VDA, VDU. VDU stand for visual display unit, and input output devices and computer memory. After that, we will understand what types of the hardwares and softwares are available actually in the computer. So, and it has many types of applications such as system operating system and system software, application softwares. Okay? And after that, we will also understand what is the data and information and concept of data processing. In the last topic, we will understand what are the computer software. Okay, so in this software we will understand system software, utility software, application software, GUI, office suites. So let's start with the what is computer. Okay, I think if you all are guys aware about what is the computer, so let's come to understand some important point about the computer. So we nowadays we are using the computer. Actually, that computer is electronic device. Okay, and it means if we are inputting some information or data, that computer manipulate accordingly. Okay, and it also have the ability to store, process, and retrieve the data accordingly. So in the complete sentence, you can say a computer is an electronic device that manipulates information or data, and it has the ability to store, retrieve and process the data. Okay, उसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन और डेटा को मैनिपुलेट करता है, मतलब चेंज करता है उसके अंदर, और उसके बाद उसको स्टोर करता है, फिर फर्दर प्रोसेस करता है या रिट्रीव करता है. Okay, so in the Latin age, actually the computer जो नेम जो इन्वेंट हुआ वो एक लैटिन वर्ड है, इसका नाम है कंप्यूटरे. ओके, इसका मतलब था कैलकुलेशन. ओके, the third point is computer is device that transforms data into meaningful information. It means whatever if we give some data to the computer turn that data into information. And nowadays, like if we say the father of the computer is Charles Babbage. So you have to remember who is the father of the computer. Father of the computer is Charles Babbage. Early computers were meant to be used only for calculation. Simply manual instruments like the abacus have the ability doing the calculation since ancient time. Means जो पहला एंशिएंट टाइम पे जो कंप्यूटर था वो उसके पास ओनली एबिलिटी थी कि चीज़ों को ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना और मल्टीप्लाई कर देना. बट नाउ द कंप्यूटर इज वेरी एडवांस. They can also process the video, they can also process the audio and also process the images. Okay, the first digital electronic computer machine were developed in during World War II. तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो इन्वेंशन हुआ वो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ. एंड नाउडेज वी कैन सी these types of the computer just like a desktop, laptop, hybrid, tablet and phones. The phone is also one kind of computer. Okay, so if we try to understand the characteristics of the computer system, so it can be categorized in 3 ways.
just like we can compare the computer in 3 and 4 ways, on the basis of the size, on the basis of the capacity, and on the basis of specification. But the major characteristics of the computer is categorized on the basis of speed, accuracy, diligence, versatility, reliability, consistency, memory, and storage capacity, remembrance power, and automation. Okay, this means अगर हम किसी कंप्यूटर्स को क्लासिफाई करें और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करें तो नॉर्मली हम डिफाइन कर सकते हैं उसके साइज से, उसकी कैपेसिटी से और उसके स्पेसिफिकेशन से, ठीक है। बट जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू बाय द सम कंप्यूटर, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स यू विल सी, वो आप ये देखेंगे कि उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा है, वो एक्यूरेट है या नहीं है, इंटेलिजेंस है, ठीक है, मेमोरी पावर कितनी है। सो दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, versatility, reliability, consistency, memory, storage capacity, remembrance power, and automation. So let's come to understand one by one what does it mean by speed in computer. So if we talk about the speed in the computer, a computer works so fast that it can process any task and provide the output in fraction of second. For example, हम कुछ अगर कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो दैट कमांड इज प्रोसेस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ठीक है। अ पावरफुल कंप्यूटर कैन हैंडल ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड व्हिच इज रियली इनक्रेडिबल। इट मींस जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर प्लेइंग द वीडियो, तो इट्स मींस इट हैज सो मेनी इंस्ट्रक्शंस एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज प्रोसेस इन अ सेकंड, ठीक है। ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो एक सेकंड में ही वो प्रोसेस हो जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। With its incredible speed, computer can reduce the amount of time to perform any digital task. It means if we are going to use the computer for the digital processing, so the process activity will be very fast. It means जो भी आप कंप्यूटर के अंदर डिजिटल एक्टिविटीज करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने कोई फॉर्मेटिंग की, आपने कोई उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन किया, सो ऑल द एक्टिविटी विल बी कंप्लीटेड वेरी फास्ट। और स्पीड को मेजर करने का द स्पीड of the computer is measured in microsecond and nanosecond. So you have to remember if you are going to compare the speed for any computer, so you have to measure the speed in the terms of microsecond and the nanosecond. Okay. Next, let's come to the accuracy. So accuracy means accurate. Result should be accurate. So if we go for the first point, the computer not only provide the incredible speed, they are also capable of consistently working with accuracy. For example, उस कंप्यूटर ने कुछ अभी टास्क किया और उसको आपने 10 आवर या 1 आवर्स के बाद सेम टास्क को रिपीट किया, सो द रिजल्ट विल बी 100% एक्यूरेट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमन अभी कोई काम करते हैं और उसके 1 घंटे बाद कोई काम करेंगे, सो दे हैव सम चेंजेस in their accuracy, okay, but the computer doesn't. Let's come to understand the second point. The degree of accuracy in the computer is very high. Computers can perform the calculation almost 100% accuracy, ठीक है। Error may be occur in the computer system, but only because of the wrong human input and inaccurate data, okay, but इसका मतलब यही है कि अगर हम कंप्यूटर को एक ही टास्क अलग अलग टाइम पे देंगे तो वो सेम एक्यूरेसी से दोनों टास्क को कंप्लीट करेंगे। और कुछ अगर प्रॉब्लम आती भी है तो दिस प्रॉब्लम इज नॉट कम फ्रॉम द कंप्यूटर साइड, इट विल कम फ्रॉम द इनपुट द डेटा। जैसे कि हमने कोई रॉन्ग डेटा इनपुट किया तो देन द रिजल्ट विल बी इनकंसिस्टेंट, ओके। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी इज ओवर, लेट्स गो फॉर द इंटेलिजेंस। द इंटेलिजेंस इज लाइक unlike a human. A computer doesn't get tired or lack of concentration. For example, अगर हमें कोई काम करना होता है तो we need a lot of concentration, but computer doesn't. तो कंप्यूटर को किसी भी environment में आप उसको use कर सकते हैं. It can work for an hour without any fault.
इट मीन्स ये 24/7 काम कर सकता है कंप्यूटर. दिस मीन्स दैट if the millions of calculations are to be done, a computer will perform every calculation and provide all the results with the same accuracy. Okay? तो इसका मतलब यही है कि जो अगर मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कंप्यूटर करता है तो उसके अंदर एक्यूरेसी सेम होगी सबके लिए. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, वर्सटैलिटी. ठीक है, तो वर्सटैलिटी का मतलब क्या है कि दिस मीन्स दैट द कंप्यूटर हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म कंप्लीट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क विद द सेम एक्यूरेसी. फॉर एग्जांपल पहले अभी इस केस में क्या हो रहा था, एक्यूरेसी में कि सेम टास्क हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे थे और दो सेम टास्क है सेम एक्यूरेसी से उसको कंप्लीट कर रहा था. तो वर्सिटिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट टास्क कंप्यूटर को दिया, ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को भी सेम एबिलिटी से वो परफॉर्म करेगा. ओके, इसका कोई पर्सनल चॉइस नहीं होता है कि अच्छा मैं इस काम को अच्छे तरीके से नहीं करूंगा, इसको मैं अच्छे तरीके से नहीं करूंगा और इसको अच्छे से करूंगा. तो कंप्यूटर के अंदर सारे काम को करने की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है, इट मींस दे हैव द सेम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज. ओके, इट जस्ट अ कैलकुलेटिंग मशीन एनीमोर. मतलब इट इज नॉट जस्ट अ कैलकुलेटिंग मशीन एनीमोर. तो ये कैलकुलेटर नहीं है कि कैलकुलेटर में आपने बस 2+2 किया तो 4 रिजल्ट आ जाएगा. इट मींस इट हैज बियॉन्ड दिस. इट कैन आल्सो प्रोसेस द ऑडियो, इट कैन आल्सो प्रोसेस द इमेजेस एंड सो मेनी थिंग इट कैन डू. ठीक है, nowadays. For example, for one moment, it can be used to create invoices or bill, or the next moment it can be used for इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एनी मल्टीमीडिया टास्क इट इज. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर से हम बहुत सारे काम आजकल लेते हैं. फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक बिल प्रिंटिंग. ठीक है, और सो मेनी जो टास्क होता है उसको प्रोसेस करने के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं. ओके, सो वर्सिटिलिटी सबको समझ में आ गया, डिलीजेंस भी सबको समझ में आ गया. लेट्स गो फॉर द रिलायबिलिटी. तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि वी कैन रिलाई ऑन कंप्यूटर. इट मीन्स द रिजल्ट ऑब्टेन बाय द कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल. इट मीन्स जैसे आपने कोई चीज प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आपके पास आया, तो दैट रिजल्ट इज वेरी रिलायबल. इट मीन्स whatever the algorithms you have used for the calculating the result, तो रिजल्ट का मतलब क्या होगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने में कुछ ना कुछ स्टेप्स को मिस कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं होता. कंप्यूटर डजंट मिस एनी स्टेप. ठीक है, but is true only when the data is given to be computer or program is correct and reliable. ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब हम कंप्यूटर को करेक्ट डेटा और सही प्रोग्राम उसको प्रोवाइड करें, देन वी कैन द कंप्यूटर कैन बी रिलायबल. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि कंसिस्टिंग कंप्यूटर कैन रन 24/7. ठीक है, विद द सेम कंसंट्रेशन. Let's go to the first point. The computer is so consistent that it can perform trillions of processes without error for several hours. ठीक है, तो उसके अंदर कोई टायर्डनेस नहीं होती है. It can work 24/7 hours. ठीक है, 24/7. This means that we can use the computer 24 hours a day or 36 day a year constantly. ठीक है, furthermore it provides consistent result for the same set of data. That is, if it is given the same set of data multiple times, it will give the same result each time. ठीक है, मतलब अगर हमने सेम सेट ऑफ डेटा कंप्यूटर को दिया तो उसको सेम टाइम में उसको कंप्लीट करेगा और इट विल प्रोड्यूस यू द सेम रिजल्ट. ओके, मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है, बट कंप्यूटर हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी. कुछ मेमोरी उसको परमानेंटली स्टोर करते हैं हम डेटा को, कुछ को हम मतलब कुछ टाइम के लिए फॉर द टाइम बीइंग उसको स्टोर करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेमोरी. तो मेमोरी का मतलब क्या है, कंप्यूटर हैज अ बिल्ट इन मेमोरी. ये कंप्यूटर के अंदर कुछ मेमोरीज होती हैं वेयर इट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इमीडिएटली. ठीक है, the random access memory RAM. I think you have heard about the RAM.
कि किसी का कंप्यूटर का रैम काफी फास्ट ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, ठीक है। तो रैम इज एक्चुअली द प्राइमरी मेमोरी, उसको हम क्या कहते हैं, इट इज द प्राइमरी मेमोरी दैट होल्ड डेटा एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द पावर सोर्स। इट मीन्स जब तक वो कंप्यूटर ऑन है तब तक उस प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा होगा। जैसे ही कंप्यूटर आपका शट डाउन होगा, इट्स मीन्स योर डेटा इज इरेज्ड। Okay, let's go to the next point, storage capacity. तो स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या है कि हाउ मच इंफॉर्मेशन, हाउ मच डेटा यू कैन स्टोर इन द एनी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कैन स्टोर vast amount of data, which means you can store so many information in your computer, ठीक है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, but nowadays the technology is evolved and we have very high efficient storage capacity in the computer as well as secondary devices. Okay, besides we also have the option to store data in secondary devices such as external drive और फ्लॉपीज, ठीक है। एक्सटर्नल ड्राइव में फ्लॉपीज आती है, यूएसबी आते हैं, कुछ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स आते हैं, सीडीज, डीवीडीज, तो इसमें भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ड्यू टू देयर इनक्रेडिबल स्पीड, कंप्यूटर कैन क्विकली रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो कंप्यूटर इतना फास्ट है कि अगर आपने उसको कोई भी डेटा को एक्सेस करना होता है, जैसे कि अगर अगर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है और उसमें से किसी पर्टिकुलर डेटा को हमको सर्च करना है, तो हमें नॉर्मल ह्यूमन को तो सर्च करने में उसको टाइम लगता है, लेकिन कंप्यूटर कैन सर्च एंड प्रोसेस वेरी क्विकली, ठीक है। The storage capacity of the computer is commonly measured in megabyte, gigabyte, terabyte and petabyte, ठीक है। तो इस स्टोरेज कैपेसिटी को हम इस तरह से यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई यूएसबी लेने जाते हैं, तो यू हैव टू टेल ओके आई नीड 2 GB यूएसबी और 4 GB यूएसबी। ओके, remembrance is another important characteristic of the computer. The computer has the power to store any data or information for as long as we like, ठीक है। So it means whatever the information you want to store for the future purpose you can store, ठीक है, for any time। मतलब ये है कि आपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा कितना हो देर के लिए, कितना हो ईयर्स के लिए, आप उसके अंदर कितने भी ईयर्स के लिए इसको हम सेव कर सकते हैं। ओके, डेटा कैन ऑल्सो बी recalled easily if needed. In it is It is our choice to decide how much data we want to store on the computer and when to recall or erase these data. It means, for example, if some data is erased from your computer, so there are so many technologies are available, and with the help of the technology, we can recover the data. Okay. Let's go for the last characteristics of the computer system. The computers can also be used automation. Automation का मतलब क्या है कि automation it's AI based technologies. So nowadays computer have the so many capability to so many tasks to work their own. जैसे टाइमर है, तो जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं टाइमिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑल्सो automation is one of the characteristics of a computer. So computers can also be used to automate routine tasks with the help of a task scheduler, such as launching specific applications or software, sending an email, scanning for viruses, and many other maintenance tasks. It means nowadays computer is just not a calculator, it has the automation capability. It means if we design some tasks, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई इसमें टाइमर सेट कर दिया या कुछ, अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक मीटिंग सेट किया, ठीक है। तो मीटिंग इज स्टार्टेड ऑन देयर टाइम, तो ये कैसे हो रहा है, दिस इज द ऑटोमेशन। ओके, एंड सो मेनी सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली रनिंग बिहाइंड द कंप्यूटर टू मेक फॉर द मेंटेनेंस पर्पज। फॉर एग्जाम्पल एंटीवायरस, तो एंटीवायरस में आपको कुछ करना नहीं होता है, यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल द एंटीवायरस इन कंप्यूटर एंड इट ऑटोमेटिकली स्कैन योर सिस्टम and troubleshoot, like it will resolve your issues. Okay, next is the besides
Computer can also program to perform many complex tasks. So nowadays computer is actually working very complicated tasks. जैसे आपने देखा होगा कि सर्वर्स हैं, तो सर्वर क्या करते हैं, सर्वर जो है हमारे एएमयू का जो सर्वर है वो 24/7 आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है. They can provide you the internet, they can provide you the our university information as well. तो वो क्या कर रहा है कि वो हमारा बहुत बड़े ट्रिवियल टास्क को वेरी इजीली वो परफॉर्म कर रहा है. फॉर एग्जांपल, अ कंप्यूटर कैन स्टार्ट डेली मेंटेनेंस टास्क ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज इन एन आइडियल स्टेट, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल आपने कभी कभी देखा होगा कि व्हेन यू हैव जस्ट keep it on your computer or the laptop and you are not doing anything, so in the background of the computer do the maintenance for some software, some memory management, so many tasks it's do, ठीक है. This includes tasks such as the software update, security scanning and the system diagnosis. तो आपने देखा होगा ना कि जैसे कभी कभी ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाता है आपके सिस्टम पे और वो कहता है कि यू शुड अपडेट योर window, you should update your software. So this is what? This is actually automation, and this is one of the characteristics of the computer. So I hope you guys understand the characteristics of the computer. So characteristics of the computer can be classified in these form, in major form. Okay. Let's go for the computer system. What is the system actually? सिस्टम का मतलब क्या होता है, अगर इफ वी टॉक इन द नॉर्मल लैंग्वेज, सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एक सिस्टम जिसके अंदर आप कोई डेटा इनपुट करते हैं, उस डेटा को वो प्रोसेस करता है. यू कैन सी जैसे लाइक हमने कोई डेटा दिया और डेटा को अंदर उसको प्रोसेस किया अकॉर्डिंगली और उसको इंफॉर्मेशन बना दिया. तो ये जो एक सेटअप है, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम. तो सिस्टम किसी का भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल बहुत सारे, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, तो यूनिवर्सिटी के सिस्टम में क्या होता है कि आपको एक एंट्रेंस क्वालिफाई करना होता है एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपको बहुत सारे जो है पेपर्स को पढ़ना होता है, उसको कंप्लीट करना होता है. व्हेन यू हैव कंप्लीटेड ऑल द पेपर्स देन यू गेट योर डिग्री. सो ये क्या है, कंप्लीट सिस्टम है. इसी तरह अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सिस्टम. उसके अंदर आपको इनपुट डेटा देना होता है एंड डेटा इज प्रोसेस एक्चुअली इनसाइड द कंप्यूटर, ठीक है, और उसको ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है. तो कंप्यूटर को अगर हम कंप्यूटर नेम को अगर हम एक्सप्लेन करें तो सी इज एक्चुअली स्टैंड फॉर कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है. तो ये एक फुल फॉर्म है इसका कंप्यूटर का. तो आई थिंक इट्स वेरी कॉमन. So a computer system is a machine that operates under the control of instructions. Infrastructure is stored in a memory. ठीक है, instructions stored in the memory. The basic term, in a basic term, computer system is a device that can accept input, store, retrieve, process the data and produce the output information. तो अगर हम इसको नॉर्मल टर्म में, सिंपली टर्म में करें तो इसका मतलब क्या होगा कि कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कुछ इनपुट लेता है, उसको स्टोर करता है और उसके बाद स्टोर करने के बाद उसको रिट्रीव करके डेटा को रिट्रीव करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट मतलब इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर देता है. ओके, सो दिस इज द कंप्यूटर सिस्टम. लेट्स गो टू द व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर. अभी तक तो हमने डिस्कस किया है कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो बहुत ही वो ह्यूमन से वो अलग बनाता है. बट कंप्यूटर आल्सो हैव सम लैकिंग्स एंड आल्सो हैव सम लिमिटेशंस. तो अगर हम बात करें तो कंप्यूटर डजंट हैव एनी कॉमन सेंस. उसके पास कॉमन सेंस नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कुछ फनी बात करें तो यू विल बी स्माइल और मे बी यू विल बी नॉट हैप्पी, ठीक है. बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है. कंप्यूटर को कुछ इसका एहसास नहीं होता है. तो दे डजंट हैव एनी कॉमन सेंस, ठीक है. नो आईक्यू, उसके पास कोई आईक्यू नहीं होता है, ठीक है. नो फीलिंग, उसके बाद कोई फीलिंग नहीं होती है. फॉर एग्जांपल उसको आपने तोड़ दिया या कहीं फेंक दिया तो इट डजंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है. नो थिंकिंग कैपेबिलिटी, ठीक है. नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी,
ठीक है, नो लर्निंग पावर, उसके पास कोई लर्निंग पावर नहीं होती है। यूजर डिपेंडेंट, मतलब यूजर के डिपेंडेंट होता है, जब तक उसको यूजर ऑन नहीं करेगा, जब तक यूजर उसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, तो कंप्यूटर विल नॉट परफॉर्म। ठीक है, नो इम्प्लीमेंटेशन पावर, फॉर एग्जांपल अगर उसने अपने सामने कोई प्रॉब्लम को होते हुए देख रहा है, तो इट विल नॉट गोइंग टू करेक्ट दैट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन पावर नहीं होती, कोई प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली वो सॉल्व नहीं करता। ठीक है, कंप्यूटर कैन नॉट एक्सप्रेस आइडिया, कंप्यूटर अपने आइडिया को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बट इन द कंप्यूटर साइंस रिसर्च, नाउ डेज कंप्यूटर साइंस एंड रिसर्च, दे एक्चुअली ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो कंप्यूटर के पास आजकल बहुत तरह के जो है पावरफुल टेक्निक्स आ गई हैं, एआई बेस्ड टेक्निक्स, और विद हेल्प ऑफ द एआई बेस्ड टेक्निक दे ट्राई टू रिड्यूस दिस लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर। यू कैन सी, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर के अंदर कोई चीज गार्बेज इनपुट किया, ठीक है, तो वो उसको कुछ सेंस नहीं है, वो गार्बेज ही आउटपुट करेगा। तो जो इनपुट हम डेटा दे रहे हैं, दैट डेटा शुड बी द एक्यूरेट। ठीक है, वो सही होना चाहिए, तभी कंप्यूटर उस पर वर्कआउट कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है, कि कंप्यूटर लैक ऑफ कॉमन सेंस है, लैक ऑफ आईक्यू है, लैक ऑफ फीलिंग्स है। ठीक है, और इसको हम नॉर्मली कह सकते हैं कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट है। इफ वी गिव सम गार्बेज टू कंप्यूटर, कंप्यूटर आल्सो रिटर्न यू द गार्बेज एज वेल। ओके, लेट्स गो टू द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स एंड आईटी। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इस मीन्स यू कैन से द रोल ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का रोल जो है बहुत सारे फील्ड में है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे नॉर्मली क्या होता था, कंप्यूटर जो है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट लोग उसको यूज करते थे, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ही यूज करते थे। लेकिन नाउ डेज कंप्यूटर इज इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी फील्ड, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर इन साइंस। ठीक है, साइंस में हम क्या कर सकते हैं, साइंस में हम उसको अपने प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन generate the reports, we can create the files, we can save our in data. ठीक है, in the defense, computer is also work in the defense, computer also work in the medicine, education, agriculture, industry, government sector. ठीक है, computer entertainment, yes, so we have a computer in every area. ठीक है, okay, let's talk about the evolution of computer. कंप्यूटर का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ? तो अगर हम बात करें 3000 BC, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था ह्यूमंस के लिए, वो अबकस था। ठीक है, तो अबकस ये बेसिकली ये ओनली परफॉर्म करता था एडिशन, सबसेक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये ओनली जो अरिथमेटिकल लॉजिक, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होता था, दे आर जस्ट कैपेबल टू डू दिस थिंग। उसके बाद 1617 में नेपेयर बोन्स एक तरह का कंप्यूटर आया है, इसके अंदर कुछ नए नए टेक्निक्स, इससे ज़्यादा कुछ इम्प्रूव हुआ। उसके बाद पेस्ट लाइन आया 1642 में, लेब्सना व्हील आया। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूटर का एडवांसमेंट ईयर बाय ईयर ऐसे होता रहा। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो मार्क 11 था, जो 1944 में आया था, और आईबीएम ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, ओके, so if we have discussed the evolution of computers, but what is the information technology? ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ द टू टर्म्स, इंफॉर्मेशन एंड द टेक्नोलॉजी। तो मतलब जो भी अगर कंप्यूटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे हमने क्या दिया था कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो कंप्यूटर सिस्टम इज व्हाट, वी आर एक्चुअली गिविंग द डेटा एंड द कंप्यूटर इज एक्चुअली टर्न दैट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. Now we are going to share that information with the different resources, like the different part, different area. So how we do this? This research, this area is known as information technology. So if we talk about the information technology is the use of any computer, storage, networking, and other physical device, infrastructure, and process to create, process, store, secure, and exchange all form of electronic data. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी जो इंफॉर्मेशन हमारी जनरेट होती है, इंफॉर्मेशन समटाइम हमें इमेज के फॉर्म में जनरेट होती है, समटाइम ऑडियो, समटाइम वीडियो,
ठीक है, समटाइम कोड्स के फॉर्म में जनरेट होती है। तो नाउ यू वांट टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद द डिफरेंट ग्रुप्स और इंटरनेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक तरह का है, डेटा सेंटर है, ठीक है, कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, सर्वर्स हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, नेटवर्क है, ठीक है, इंटरनेट है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है। तो सो मेनी एरिया वेयर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली वर्क, ठीक है। लेट्स गो टू द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ आईटी। So, if we talk about the information technology, the information technology is not very new concept. It is very old concept. It is start from the human being. जैसे जैसे human का अपडेशन, मतलब जैसे जैसे humans का एक तरह से जनरेशन आती रही, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आते रहे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बीन अराउंड फॉर द लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बेसिकली अ लॉन्ग एज पीपल हैव बीन अराउंड, मतलब जब से इंसान है तभी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। बट दैट टाइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नॉट वेरी मच मैच्योर, बट नाउ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज वेरी मच वेरी वेरी मैच्योर, ठीक है। So humans have always been quick to adopt the technologies for better and fast communication. फॉर एग्जाम्पल, पहले जमाने में क्या था कि अगर जो व्हील का इन्वेंशन था, आपने शायद सुना होगा व्हील, तो जो व्हील का इन्वेंशन था दैट वाज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी। और उसके बाद उन्होंने व्हील का इन्वेंशन करते करते आजकल देखिए कितनी मॉडिफाइड कार्स उन्होंने बना रखी है, कितने फास्ट कार्स हैं, ठीक है। सो दैट इज द एक्चुअली इवोल्यूशन इन द कंप्यूटर। इसी तरह इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना और उसके अंदर अपडेट आना उसके प्रोसेसिंग में, so that is the called information technology. Humans have always been quick to adopt technologies for the better and fast communication. There are four main ages that divides up to history of the information technology, but only the latest age is electronic. तो जो अभी हम आजकल यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रो मैकेनिकल एज really affect us, ठीक है। तो basically nowadays we are using the information technology in the form of electronic और electromechanical, ठीक है। इस तरह की दो टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। अब देखिए आजकल जो भी हम डिवाइसेस यूज करते हैं, वी नीड टू वी नीड टू चार्ज, वी नीड टू गिव द इलेक्ट्रिसिटी। मोबाइल फोन है, उसको जब तक आप चार्ज नहीं करेंगे इट कैन नॉट वर्क। कंप्यूटर को भी चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, दिस मीन दे नीड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को डिवाइड करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली फोर पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट वन इज द प्री मैकेनिकल, दूसरा है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम जैसे मशीनरी होती है, मशीनरी का मतलब वो जो चीजें या तो बॉल एंड बेयरिंग्स पे जो काम करते हैं, ठीक है, दैट इज मैकेनिकल, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि प्री मैकेनिकल एज क्या था। तो प्री मैकेनिकल एज जब वो अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते थे, तो यू कैन सी द पेट्रोलॉजी, ठीक है। तो ये एक तरह का पिक्चर है, ठीक है। तो पहले के जमाने में अगर किसी को बताना होता था कि वी हैव हाउ मेनी काउज एंड द शिप्स, सो दे जस्ट ड्रॉ द पिक्चर्स। वे तो वो क्या करते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे किसी से, वो क्या करते थे, पिक्चर्स को ड्रॉ करते थे और पिक्चर्स को वो एक्सचेंज किया करते थे फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। तो ये एक तरह का प्री मैकेनिकल एरा था, ठीक है। तो दिस एरा इज एक्चुअली बिटवीन 3000 BC to 1450 AD, ठीक है। The earlier age of the technology have been dated back to the pre-mechanical age between this and this, okay. Human being at that time primarily communicated with each other using simple picture drawing called पेट्रोलॉजी, ठीक है, पेट्रोग्राफी, ठीक है, पेट्रोग्राफी इन उत्थान। They create this drawing on rock. This form language was used to tell a story, to keep record of how many animals one owned and
to make their territory. ठीक है, तो यही है कि फॉर एग्जांपल अगर उन्हें किसी से कम्युनिकेट करना था, होता था कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, तो इन चीजों का फिगर बना देते थे, या तो वो फिगर किसी रॉक पे बनाते थे या तो किसी पत्थरों पे बना दिया करते थे। ठीक है, तो दिस era is called the pre-mechanical era. So let's come to the mechanical era. तो मैकेनिकल एरा का मतलब क्या है कि मैकेनिकल एरा को हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी, इट वर्क विद द ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, तो मैकेनिकल एज इज व्हेन वी फर्स्ट स्टार्टेड टू सी द कनेक्शन बिटवीन आवर करंट टेक्नोलॉजीज एंड इट एंसेस्टर्स। ठीक है, द मैकेनिकल एज कैन बी डिफाइंड एज द टाइम बिटवीन 1450 to 1840। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस एक पास्ट लाइन, दिस इज द कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर ये उस टाइम में मैकेनिकल एरा टाइम में दिस इज द इन्वेंटर। ठीक है, Pascal involved in the Pascaline, a very popular mechanical computer capable of adding, subtracting and multiplying and dividing two numbers। तो बेसिकली ये एक तरह का एक कंप्यूटर था जो कैपेबल था दो नंबर्स को एडिशन करने में, दो नंबर का सबसेक्शन एंड उनका डिवीजन करने में ये कैपेबल थे। लेट्स कम टू द इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल एरा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल एरा का मतलब क्या है कि इसके अंदर दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। इट आल्सो हैव द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट एज वेल एज द मैकेनिकल पार्ट। ठीक है, तो द इलेक्ट्रोमैकेनिकल एज हियर द बिगिनिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो जब अगर हम बात करें आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द पार्ट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो उस वक्त टेलीकम्युनिकेशन का इन्वेंशन हुआ था, और इसका मतलब ये होता है कि इफ यू वांट टू ट्रांसफर सम इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सन, यू कैन यूज द कंप्यूटर दैट टाइम। बिफोर एज कंप्यूटर काम क्या करता था, पहले काम क्या कर सकता था कंप्यूटर, कंप्यूटर ओनली कैन परफॉर्म द एडिशन, सबट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन on two numbers. But now in the electronic mechanical era, we can have the telecommunication capabilities, which means we can communicate with anyone. So ये जो एज थी वो 1840 से 1940 के बीच में। okay, several revolutionary technology were invented in this period, such as the Morse code, telephone, radio, and etc. All of these technologies were crucial stepping stone towards modern information and technology। तो ये जो सारी चीजें उस वक्त मॉर्स कोड एंड टेलीफोन एंड रेडियो, ये एक तरह का हमारा एक क्रूशियल स्टेप था। इसके अंदर हमें बहुत तरह के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी करना था और हमें टेक्नोलॉजीज को अपडेट भी करना था। दैट टाइम वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस ऑल थिंग। द फर्स्ट लार्ज scale automatic digital computer in the United States was the Howard Mark I, ठीक है, created by IBM in 1940। तो ये एक तरह का कंप्यूटर था जो दुनिया के सामने आया, और उसने एक्चुअली उसका नाम क्या था, उसका नाम था हार्वर्ड मार्क I, और इसको किसने बनाया था, IBM इन 1940। ओके, तो इसको ऑपरेट करने के लिए, इस तरह के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए तो मल्टीपल पर्सन्स दे आर रिक्वायर्ड, एंड बहुत बड़े रूम की हमें जरूरत पड़ती थी। ओके, लेट्स कम टू द करेंट एरा। ठीक है, तो जो अभी हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, बेसिकली दैट कंप्यूटर इज द इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। द इलेक्ट्रॉनिक एज इज स्टार्टेड फ्रॉम द 1940 टू द प्रेजेंट। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो भी हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, वो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में है। These machine use electronic switches in the form of vacuum tube instead of the electromechanical relay seen in the previous era। ठीक है, तो पहले जो डिवाइसेस जो क्रिएट की जाती थी वो एक मैकेनिकल डिवाइसेस क्रिएट की जाती थी, बट जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक एरा में हमने उसको वैक्यूम ट्यूब से कन्वर्ट कर दिया। जैसे बल्ब है, तो बल्ब भी क्या है, जो बल्ब का इन्वेंशन है, या CRT मॉनिटर उस वक्त था, तो वो एक तरह का वैक्यूम ट्यूब से वो बने हुए थे। ठीक है, तो इनैक इज द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर
was the first electronic general purpose computer. तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, तो यू शुड टेल ENIAC. ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ENIAC न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड द कंप्यूटर. It could solve the large class of numerical problem through the programming. मतलब ये कि ये इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज आ गई थी कि अगर हमें मोर देन 2 इंटीजर्स, मोर देन 2 मतलब एक से ज्यादा नंबर्स, मतलब 2 से ज्यादा नंबर या बहुत बड़े बड़े नंबर्स के ऊपर हमें कैलकुलेशन करना है, तो दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर is capable to perform the calculations. Okay, so I think for the today class is okay. Some of need to go for the another class. Yes, So sir. I just stop it here. So let's just tell you how much we have covered right now. We have just covered the what is the computer, and in the